Hello, dear students. Once again, I welcome you all to my physics class. Okay. In the last class, we have discussed what is charge and what are its different properties. All right, and how the different methods of production of charge. All these things we have discussed in the last class, and today we will discuss what are its units and different properties of charge. All right. तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्ज प्रोडक्शन ऑलराइट और इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांचेस और उसका हिस्ट्री ये सब पढ़े थे. नाउ इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग इस यूनिट्स एंड प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम. चार्ल्स अगस्टिन कुलम, ओके, उनके नाम पे ये रखा गया है 1 कुलम. ऑलराइट, ये है उसका एसआई यूनिट. ऑलराइट, जैसे कि हमारा सीजीएस यूनिट भी होता है सारी क्वांटिटीज का, ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह का यूनिट होता है, ठीक है. एक है ESU कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दूसरा होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. इन दोनों यूनिट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे लेटर चैप्टर्स में, ठीक है. तो for the time being, just you remember that the SI unit is Coulomb and the CGS units are state Coulomb and ab Coulomb. All right, now see what is 1 Coulomb. All right, what does it mean? Look at this number. The charge of 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons is equal to 1 Coulomb. It means that suppose आपके पास एक neutral body है, उसमें से अगर आप 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons अगर आप निकाल दोगे तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज रहेगा. कितना चार्ज रहेगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज. Okay, so look at this number 10 to the power 18 and it's a very huge amount of electrons. ठीक है, और ये बहुत सारा चार्ज होता है, हम उसको अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, so the charge of 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons is equal to 1 coulomb. All right, अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? द चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी 1 over 6.25 into 10 to the power 18. Obviously, if you calculate this value, you will get 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it is negative. All right, so this is the charge of an electron and it is the fundamental charge. Okay, fundamental charge means the least charge. Okay, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम चार्ज होता है और ये सबसे फंडामेंटल है. इट इज हाउ मच? 1.602 into 10 to the power minus 19. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन. हमें पता है पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है, तो ये भी हमारा 1.602 into 10 to the power minus 19 है, बट ये पॉजिटिव है. All right, as I already said, 1 coulomb is a huge amount of charge. ये बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, we cannot hold it. All right. Next, these are some other units of charge. Okay, like these are some mathematical values are there. 1 millicoulomb, it means 10 to the power minus 3 coulomb. 1 microcoulomb, 10 to the power minus 6 coulomb. 1 nanocoulomb, 10 to the power minus 9 coulomb, and 1 picocoulomb, 10 to the power minus 12 coulomb. So these are some smaller units of charge. Okay, in day-to-day life we generally encounter charges up to 1 microcoulomb. ठीक है, हम day-to-day life में ज़्यादा से ज़्यादा 1 microcoulomb तक हम हैंडल करते हैं, उससे ज़्यादा हम चार्ज हैंडल नहीं करते. Okay, and look at this. Look at the relation between coulomb and state coulomb. See this. Okay, 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulombs. Okay, this is your electrostatic unit or CGS ESU हम कहते हैं इसको. All right, and the relation between 1 coulomb and ab coulomb is something different. Okay, 1 over 10 ab coulomb. तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, इनमें से कौन बड़ा है? ऑलराइट, 1 over 10 ab coulomb. ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ऑलराइट, हमने यूनिट सब डिस्कस कर दिए. ऐसा यूनिट है कूलम और सीजीएस का 2 यूनिट है, एक है आपका स्टेट कूलम, दूसरा है ab coulomb. नाउ सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. All right, the first property is additivity. Next is quantization and conservation. ये तीनों प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमें उसको डिटेल पढ़ना है. फर्स्ट हम देखेंगे एडिटिविटी क्या होता है. All right, एडिटिविटी मतलब it comes from addition. All right,
तो सपोज हमारे पास एक सिस्टम है और एक बॉडी है, मतलब एक बॉडी सपोज हमारे पास है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स में सपोज डिफरेंट चार्जेस है, लाइक दिस Q1, Q2, Q3 and Q and all that. So if somebody asks what is the total amount of charge, then the total amount of charge will be the algebraic sum of all the individual charges. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. All right. So what does it mean by saying algebraic sum? ठीक है, algebraic sum मतलब they will be added mathematically. All right. Suppose I have got minus 3 coulomb and plus 2 coulomb. ठीक है, 3 coulomb of negative charge and 2 coulomb of positive charge. If I will add them, what will happen? I will get minus 1 coulomb. They will be just added mathematically. This is what the additive property says. All right. So the total charge will be the algebraic sum of the individual charges. This is your additive property of charge, additivity. All right. Next comes, and this property of charge is very important. It is quantization of charge. ठीक है, this property is very important. Okay, quantization, ये इस word का मतलब है fixed. All right, quantization means if a quantity can have only certain permitted values or discrete values as I've said. All right, उसको बोलते हैं quantization. सपोज हम एक बड़ा सा बिल्डिंग देखेंगे, सपोज उसमें 14 या 15 फ्लोर्स है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 15 फ्लोर का बिल्डिंग है, बट ये ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि 7.5 फ्लोर का बिल्डिंग है. ए फ्लोर कैन नॉट बी हाफ. ऑलराइट, तो दीज आर दे कम एज पैकेट्स, जिसका मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता, उस क्वांटिटीज को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. ऑलराइट, so quantization means discrete or the fixed values. Electron has the smallest fundamental charge. देखिए, हम पहले ही क्लास में पढ़े हैं कि चार्ज कैसे प्रोडक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से होता है या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होने से होता है. ठीक है, तो कितना चार्ज हुआ मतलब क्या, हमें गिनना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं. ठीक है, तो हमें ये सब पता है. मैंने थोड़ा यहाँ पे डाटा दे दिया है जिससे आप क्लियर हो जाओ कि ये है क्या. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज. एज वी नो, charge on a body means some electron might have added or some electron might have lost. All right, suppose a body is charged, इसका मतलब क्या है, the body might have lost some electron or might have gained some electrons. तो suppose मैं बोलूँगा कि एक बॉडी में चार्ज Q है. suppose if a body has a charge Q, ठीक है, then what will happen, we have to see how many electrons have gained or lost, or the formula for charge may be written as Q is equal to N into E. Look at this formula first. All right, what I've said is the total amount of charge on a body is suppose Q. All right, it may be 3 coulomb, 5 coulomb, whatever. All right, तो हमें क्या करना है कि सपोज चार्ज ये है हमारा Q, ये चार्ज बना कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं. ठीक है, तो सपोज ये है E है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, अगर उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें चार्ज मिल जाएगा. जैसे कि मैंने वो पहले स्लाइड में बताया कि 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने से 1 कूलम चार्ज बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, कितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूंगा, तो कितना चार्ज मुझे मिल जाएगा, n into E, where E is the electronic charge, 1.602 into 10⁻19 coulomb. समझ गए? So this is the formula of quantization of charge. Q is equal to N into E, where Q is the total amount of charge on the body, N is the number of electrons that have been removed or added to the body, and E is the electronic charge. ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको एग्जाम में. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू 1.602 into 10⁻19 coulomb. ऑलराइट, लुक एट दिस इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 10 12 etc. ठीक है, the amount of charge cannot be a fraction. It cannot be a fraction. All right, it means that we can have charges like 2 electron, 3 electron, 10 electron, but we cannot have charges like 1.2 electron, 5.6 electron. Okay, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कोई एटॉम को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट आधा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को काट के उसमें ऐड कर सकना, ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंडिविजिबल है. This is what your quantization says. All right, the charge on a body is some integral multiple of a fixed value. Okay, and what is that fixed value? It is the smallest amount of charge, 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. All right, next is your conservation of charge. जैसे कि हम पढ़ते हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट, लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, so what does it say? The total charge of an isolated system remains constant. What do you mean by isolated system? Isolated system means the total force is zero. Okay, if the system is not acted upon by any force, then the system is said to be isolated system. All right, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है. अगर हम उस सपोज कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसको अगर हम स्प्लिट कर दे तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो बन जाएगा. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है सोडियम क्लोराइड एटम है, इसको अगर स्प्लिट कर दे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस. ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो अगेन वो न्यूट्रल बन जाएगा. ठीक है, तो चार्ज पहले भी जीरो था, इसके बाद भी कितना हुआ, जीरो हुआ. तो टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज कंजर्व्ड. कंजर्व मतलब कांस्टेंट. ऑलराइट, और हियर जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी है चार्ज, वैसे ही हमारा दूसरे मैकेनिक्स हो जो और अदर ब्रांचेस में हमारा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो है मास. मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो ये चार्ज और मास को हम थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस दिखा सकते हैं. ठीक है, देखिए चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है. ओके, बट मास कभी नेगेटिव नहीं होता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज का कुछ ही वैल्यू है, सर्टेन वैल्यूज आर ओनली अलाउड, नॉट ऑल वैल्यूज आर अलाउड. बट मास का ऐसा कुछ नहीं है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. वी कैन हैव 1.2 kg, 1.3 kg, 1.9 kg and all that, right? And it is strictly conserved. Okay, we'll be stopping here. All right, well, we are back now. ठीक है, mass is conserved, mass is not conserved, but charge is conserved. Force between two charges may be attractive or repulsive. Force between two charges may be attractive or repulsive, but force between two masses is always attractive. जैसे हमारा gravitational force है वो हर वक्त attractive है. There is no repulsive gravitational force, जैसे कि हम 9th standard में already पढ़े हैं. And charge does not depend on the speed of the body. Charge is invariant. इसका मतलब थोड़ा समझो. बॉडी में अगर सपोज कुछ चार्ज है, अगर बॉडी को हम मूव कराएंगे या फिर रेस्ट में रखेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज का. चार्ज का वैल्यू उतना ही होता है. बट मास के लिए ये नहीं होता. अगर हम बॉडी को थोड़ा मूव करें तो उसका मास बढ़ने लगता है, उसको हम रिलेटिव मास कहते हैं, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ सकते हो. ठीक है, ये होता है. दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास. ठीक है, ये कभी एग्जाम में आता है. तो in this video we have discussed different properties. क्या क्या properties हैं? Additivity, quantization and conservation of charge. We have also discussed the difference between charge and mass, and we have also discussed some units of charge. Right. So we have discussed a lot of things, where in the next class I will give you some questions which you have to answer. Okay, and do contact me for different queries. Thank you.